हाँ जी दोस्तों, अज की वीडियो च आपां तुहानूं करावांगे बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चनस। हाँ जी मित्रों, इन्हां क्वेश्चनों विचों ही ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ पेपर ਵਿੱਚ क्वेश्चन ਆਣਗੇ, इस करके वीडियो ਨੂੰ एंड तक ध्यान नाल देखते रहना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनस ने, इस करके चलो शुरू करते हैं अज की वीडियो। तो हाँ जी मित्रों, यह हैगा पहला पार्ट अपना, तो सैकेंड पार्ट भी जल्दी लैके आवांगे आपां वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनस का। पहला क्वेश्चन हैगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने लवे, वट कॉज्ड डिस्परेशन टू द गॉड्स। इसका आंसर हैगा अ फाइट वॉज गोइंग ऑन बिटवीन द गॉड्स एंड डेमोन्स। The demons had upper hand in this fight. It caused desperation to the gods. Next, second question है, who did the gods go to in the desperation? In the desperation, the gods went to Lord Vishnu to seek his help to defeat the demons. ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, वट वॉज द सैक्रीफाइस ऑफ सेंट ददीची। इसका आंसर है सेंट ददीची लेड डाउन हिज लाइफ सो दैट हिज बोन्स कुड बी यूज्ड टू प्रपेयर एन इनविंसिबल वैपन विच वॉज टू बी यूज्ड टू पुट एन एंड टू ईवल। फोर्थ क्वेश्चन है, वट वॉज लॉर्ड विष्णुस एडवाइज टू द गॉड्स। लॉर्ड विष्णु एडवाइज्ड दैम टू गेट माइटी स्वॉर्ड प्रपेयर्ड फ्रॉम द बोन्स ऑफ सम ग्रेट सेज। इस तो अगे अपन आए ना फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डिड सम स्कॉलर्स लाफ एट अष्टावक्र। सम स्कॉलर्स लाफ्ड एट अष्टावक्र टू सी हिज डिफॉर्म्ड बॉडी। दे थॉट दैट अ पर्सन विद सच मिसहैपन बॉडी कुड नॉट डिस्कस हिज फिलोसफी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वट वॉज द स्टेटस ऑफ वूमेन इन एन एंशियंट टाइम। इन एंशियंट इंडिया वूमेन enjoyed a high status in the society. No SPS function was considered to be held properly without the presence of women. Seventh question, how did Ashtavakra react? Ashtavakra became very angry and said that he was ashamed of being invited to the assembly of skinners. Eighth question है, what does Lord Rama's meeting with the Bhil woman and eating the tasted berries show? The answer है Lord Rama's meeting with the Bhil woman and eating the tasted berries show that there was never any discrimination in ancient India on the basis of caste, creed, sex or profession. इस तो अगे नाइन्थ क्वेश्चन है, why did Shivaji bow his head before the woman who was brought to him as a gift? Shivaji bowed his head before the that woman to honor her. He not only bowed his head before her but also called her his mother. अगला चैप्टर है द होम कमिंग विचों क्वेश्चन है, जो इंपोर्टेंट वो कराने। हाउ वॉज फटीक रिसीव्ड बाय द आंट। फटीक्स आंट रिसीव्ड फटीक विद हेटर्ड। She did not like Fatik's entry into her home. He was a very unwanted guest for her. Second question, who was Fatik? Fatik was a 14-year-old village boy. He lived with his mother and younger brother Makhan. He was the ringleader of the village boys. Third question, why were Fatik and his friends annoyed with Makhan? Fatik and his friends were going to roll away a heavy log of wood from his place, but Makhan came and sat on this log. Makhan did not move away from this position in spite of their warning, so they were annoyed with Makhan. Fourth question है, what was the new mischief Fatik thought of? He thought of rolling away a heavy log of wood from its place. This log of wood lying on the mud flat on the bank of the river. It was waiting to be shaped into a mast. Fifth question है, what was Fatik's new maneuver? Fatik's new maneuver was to roll the log of wood along with Makhan. Was Makhan speaking the truth? No, Makhan was not speaking the truth. Fatik did not beat him. The fact was Makhan had beaten the Fatik. तो अगे सेवंथ क्वेश्चन है, वट वर द Fatik's last words? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Fatik's last words was
मदर द हॉलीडेज हैव कम। द मेकिंग ऑफ द अर्थ 7th चैप्टर है, इस विचों क्वेश्चन है जिहड़े। पहला क्वेश्चन हैगा हाउ वर ओशियंस एंड सीज फॉर्मड। वैन द अर्थ कूल्ड all the vapors in the air condensed into a water and came down as rain. It must have rained heavily. All these water filled the great hollows in the earth. Thus the oceans and seas were formed. तो next second question है इस विच how was the earth formed? It happened millions years ago that a small portion of gases shot out from the sun. With the passage of time it cooled down and took the shape of earth. Third question है why do the stars twinkle? Third the answer है the stars are balls of fire like our sun. They seem to be twinkling as their rays pass through different layers of atmosphere. Next question है fourth what are planets? A body in space that moves around a star is called a planet. For example, our Earth is a planet because it moves around the sun. The sun is a star. Fifth question is next. Define solar system. A solar system means that sun and its family. It includes Earth, Moon, other planets and their satellites. Next question is sixth. How can you distinguish between planets and stars? The simple method to distinguishing the stars from planets is to see if they twinkle or not. Stars twinkle but planets do not twinkle. Seventh question is why does the moon look bigger than the stars? The moon looks bigger than the stars because it is quite near to the earth. Again next अपना big question है थोड़े what are planets? Define the solar system. A body in space that moves around a star is called a planet. For example, our Earth is a planet because it moves around the sun. The sun is a star. This solar system means that sun. हाँ जी मित्रों, तो अगला सेकंड क्वेश्चन है राइट अ फ्यू वर्ड्स ऑन द हैप्पी फैमिली ऑफ द सन। इसका आंसर है द सन एंड द प्लैनेट्स विद देयर सैटेलाइट्स फ्रॉम हैप्पी फैमिली ऑफ द सन। दिस फैमिली इज ऑल्सो नोन एज सोलर सिस्टम। Solar means belonging to the sun and the sun being the father of the all planets. The whole group is called solar system. तो again third question है write a short note on the making of the earth. Long ago the earth and the other planets were part of the sun. Somehow little bits of the sun gods loose shot away from it. One of these bits was our earth. To begin with, it was as hot as the sun, but very slowly it started to cool and then life began to appear on it. अगला चैप्टर आ जाता है द रूल ऑफ द रोड चैप्टर 8th। इस विच जेह्ड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराने आ। पहला क्वेश्चन है वाई वॉज द स्टाउट लेडी वॉकिंग डाउन ऑन द मिडल ऑफ द रोड। The stout lady was walking in the middle of a road because she thought that it was her right to being a citizen of the free country. Second question, how was the stout lady mistaken about liberty? Walking in the middle of the road, she was depriving other people of their liberty. Thus she was mistaken about liberty. Third question, what does the policeman at Piccadilly Circus symbolize? The policeman at Piccadilly Circus symbolize the savior of their people's liberty. Fourth question है can we do whatever we like doing? Yes, we can do everything that we like provided it does not deprive the other people at their liberty and does not disturb their peace. तो अगला फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द राइटर रीडिंग ड्यूरिंग द जर्नी। ड्यूरिंग द जर्नी द राइटर वाज रीडिंग अ ब्लू बुक। तो अगला सिक्स्थ क्वेश्चन है हु डिस्टर्ब्ड द ऑदर ऑन द ट्रेन। अ टॉकटिव पैसेंजर डिस्टर्ब्ड हिम बाय टॉकिंग अनलेस थिंग्स इन लाउड वॉइस। तो अगला क्वेश्चन है सेवंथ व्हाट वाज द इंट्रूडिंग पैसेंजर टॉकिंग ऑफ। He was talking about any and every subject of the world.
ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦ ਅਦਰਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ। तो अगे 9th क्वेश्चन है वाई डिड द राइटर नीड अ रीजनेबल साइलेंस इन द कंपार्टमेंट। द राइटर वॉज नॉट रीडिंग द बुक फॉर प्लेजर, ही वॉज रीडिंग इट फॉर अ सीरीयस परपस, दैट वॉज वाई ही नीडिड अ रीजनेबल साइलेंस। तो हाँ जी मित्रों, इस पार्ट में आप तुहानूं इन्ने के जिहड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने ते पार्ट 2 भी अपना जल्दी आ जाएगा। इस करके जे तुसीं अपने चैनल ते नवे आए हो चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਜਲਦੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ।